hopeful aspirants. As I started out saying that I don't know to what extent I'll be able to impart the wisdom, but if you can, from my experiences, figure out for yourselves which are worth following, and the wisdom comes from not following some of those. All right, so that you're able to assess. You see, in my long career, I started. This is a very brief introduction. I will not talk much about myself, but you please keep taking out the experiences part. I studied BSc and MSc here in Delhi University in St. Stephen's, and then I had the privilege of serving as a lecturer right there, because I was not old enough to appear for the civil services. I had done it at the age of 20. So, बढ़िया है. I found that teaching taught me much more about my subject than 5 years of learning as a student. Because invariably you end up preparing for the difficult questions which the students will ask. And therefore you have to be a little wider in your study. That is an important thing, because for the preparation for civil services, your approach has to be pretty similar. You have to prepare a little wider than what might be asked. Okay. I naturally took at that time that exam system. It used to be 2 papers, optionals. You're somewhat luckier. So I took physics, and because I'm a bit of a maverick, I took law without ever having studied law. And the fact that I made it, missed the IAS by 1 mark, 1 rank in fact. So got IPS, and the body of a student who had not been exposed to physical regimen got toughened thanks to the police academy, and that is a much more important phase of my life than the IAS training, which was a cakewalk then. Next year I got into IAS with the same zid and the same subjects, law. Now opted for the UT cadre, now known as Agmat cadre. I have had the privilege of serving in the Northeast for 6 years in what is the most difficult part of Northeast. And okay, I'll not count the 60s, they were the most difficult, but during the 80s it was, entire short of secession, they were doing everything, and it was very anti mainland India feeling. Which state that was? Assam for 1 year and Arunachal for 5 years. So 85 to 86 I trained in Assam. The Assam Accord, it was signed in front of me. I was in Guwahati, fortunately posted as a training officer, and what followed was the election and the formation of the AGP government. All that was, I'm the only person in Delhi who would be able to tell this, because I was a UT cadre person on secondment to an Assam government, so I had no real how should I say, sense of belonging to Assam government. So I was more of an impartial observer, and therefore I can talk in a very different language that way. But 5 years in Arunachal, कहने को तो DC, I was the youngest deputy commissioner in the country at the time, which was also district and sessions judge. Judiciary was not separate. Now your entire generation will miss out on that experience of what it feels like to be a district magistrate and a district and sessions judge, which means the power to sentence a person to death at the age of 26. It is very heady. And to tell you very honestly, shuru mein when I became a DC, it was wherever I am going, the national flag will go, and I will sit below the national flag and talk to people. It's very heady. But the important lesson was that all power is so extremely, it's like a very sasta nasha. So in 3 months, I had stopped using the red light or siren, and after that till today I've never used it. वाकई सस्ता नशा है.
दैट इज़ ओके। कुछ लोग हंस रहे हैं जिन्होंने सस्ता नशा भी किया होगा मेरी तरह। लेकिन असली नशा ये होता है कि असली बढ़िया वाला नशा आप समझ सकते हैं, वो ये है कि मैं 4 साल एक ऐसे ज़िले में था जहां आज भी हालात वैसे ही हैं जैसे 1950s में थे, except for the mobile phone. And when my son was born, I was in Arunachal. He was naturally being delivered in Delhi. But वो खबर मुझ तक पहुंचने में to a Deputy Commissioner of India in 1988, it took me 48 hours. That was the communication thing. और बढ़िया वाला नशा ये है कि उसकी मेरे बेटे की शादी में उस ज़िले से 5 लोग अपने खर्चे पे आए थे. That is the kind of love and affection which you get when you know, that is the real nasha. So it is up to you which nasha you want to do. Something which will last you a lifetime, or something which can actually go away in 3-4 months. So one thing I would like to ask, like, the job of a civil servant is a very difficult and challenging, and it requires to manage lot of stress. And somewhat the students who are preparing for civil services, they also require to manage lot of stress. Nowadays there is significant amount of stress due to social media and all. So any suggestions or advice for them? Lots. How to deal and manage with this stress? देखिए, इस वक्त आप ये सोचिए, अर्जुन और वो मछली वाला तो बाद में आएगा, वो तो आपकी परीक्षा है. लेकिन एक दफ़ा द्रोणाचार्य रात में उठे और उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी. एंड ही वेंट आउट एंड ही सॉ कि अर्जुन जो है वो अंधेरे में अभ्यास किए जा रहा है. आज आप लोग दिशा भ्रमित न हो. प्लीज़ डू नॉट बी कंफ्यूज्ड बाय एवरीथिंग. यू डोंट वांट टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग गोइंग अराउंड यू. प्लीज़ डोंट. इस वक्त आपका फोकस एक विद्यार्थी की तरह होना चाहिए. Please don't think about what stress will come to you when you are a deputy commissioner or you are a joint secretary in some government or you are OSD to some minister. उसका वक्त है. वो टेंशन अपने आप आएगा, उसके सॉल्यूशंस भी अपने आप आएंगे. ठीक है. जब आप घिस के तैयार हो जाएंगे तो आपके पास वो हिम्मत भी आ जाएगी उन स्ट्रेस को फेस करने की, उनका जवाब देने की. माई रिक्वेस्ट टू यू इज़, अभी आप विद्यार्थी हैं, उसी मोड में रहिए. और कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा. देखिए, मैं अपने आप को ऑन ए स्केल ऑफ IQ बिटवीन 1 and 10 करीब 6.5 का मानता हूँ. और मैं मॉडेस्ट नहीं हो रहा हूँ, हकीकत भी यही है. लेकिन ये ज़रूर बता दूँ कि 8.5-9 वाले जो IQ के हैं, दे डोंट मेक इट टू द सिविल सर्विसेज क्वाइट ऑफन. वो इतने ज़्यादा अपने आप को संकुचित कर लेते हैं, अपने विचारधारा को, अपने सेंस ऑफ जो उन्हें पसंद है वो उन्हें बहुत ज़्यादा एनीवे, आई विल नॉट गो इनटू इट. पॉइंट इज दे डोंट मेक इट टू द सिविल सर्विस. नाउ यू आर हियर इन ऑर्डर टू मेक इट टू द सिविल सर्विस. सो प्लीज़ डोंट बी स्वेड बाय लॉट्स ऑफ थिंग्स. आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए अपने आप को जज करने के लिए, और ये मेरी कही हुई बात नहीं है, शाहरुख खान की कही हुई बात है, इसलिए आप लोग सुनेंगे. ए वेल एजुकेटेड पर्सन इज वन हु पिक्स अप अ न्यूज़पेपर and is able to understand every piece of news from the first to the last. अब इसमें कहाँ पे 3 लोग खाई में गिरने से मर गए, किस जगह किसने किसका क्या कर दिया, वो छुटपुट है. दैट इज़ ऑल अखबार भरने के लिए एंड सेंसेशनलिज्म. My first request to you is take a good newspaper, subscribe to it, take a red pencil, और सबसे पहले आप ऐसे हाशिया वो सर्कल बना दीजिए जो पढ़ने लायक न्यूज़ है. आपके पास वक्त कम है, और आपके पास कंसंट्रेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है. तो इसलिए गुलदस्ते में जैसे फूल हैं, फूलों पे जाइए. साथ में जो भरने के लिए पत्तियां लगा दी जाती हैं उस पर मत जाइए. ये मेरी पहली एडवाइस है. उसको फिर आप कायदे से पढ़िए, और हमेशा हर रोज़ वो जो बीच में सेंटर स्प्रेड निकलता है उसको बड़े आराम से पढ़िए.
और उसके बाद अगला स्टेप आपके लिए हमेशा होना चाहिए कि उस लेफ़्ट साइड को जो सबसे बड़ा निकलता है एडिटोरियल वो सब, उसको 1/3 उसकी प्रेसी बनाने का अभ्यास कीजिए साल भर तक। किसी भी सब्जेक्ट पर आप 500 शब्द लिख सकती हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट पर अगर मैं आपको कहूँ कि 100 शब्द लिखिए, तो आपके ये दुविधा होगी कौन सा छोड़ूं। सरदार पटेल पे आप 6000 शब्द लिख सकती हैं, लेकिन क्या सरदार पटेल के व्यक्तित्व को 160 शब्दों में बयान कर सकती हैं? वो है असली प्रैक्टिस कि आपकी एक एक किस थॉट पे और किस शब्द पे क्या पकड़ है, राइट? सो दैट समराइजेशन ऑफ a large article into a small article, it is a skill which you should know in order to appear for this and succeed at it. आप में से कई लोग ऐसा ऑलरेडी करते होंगे। मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दूं जो आपको और कोई नहीं बताएगा, बिकॉज आई एम पर्सनली अवेयर ऑफ इट। लेट श्री धीरूभाई अंबानी के पोते और नाती ये सब लोग हैं ना, जो आज इतने बड़े बड़े ग्रुप्स के सर्वा बने हुए हैं। उनके नाम अंशुल और ये और वो जो भी हैं, उनके उस वक्त में 4-5 पोता पोती लोग थे। उनकी मैं इसलिए जानता हूँ, आई वाज पोस्टेड एज सेक्रेटरी टू द गवर्नर गोवा। बाय द वे, असम, अरुणाचल, गोवा एंड अंडमान्स, सो भारत का अच्छा खासा एरिया मैंने सर्व किया है अपार्ट फ्रॉम दिल्ली। इन गोवा आई हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग द सेक्रेटरी टू द गवर्नर, और वहाँ पे वन ऑफ द पीपल इज मिस्टर दत्ताराय सलगांवकर, हुज वाइफ इज़ मिस्टर धीरूभाई अंबानीज डॉटर दीप्ति जी। तो वो बता रहे थे, सो इट्स कमिंग फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स, कि उनका धीरूभाई जी का अपने सब ग्रैंड चिल्ड्रन को ये आदेश था कि सुबह के सारे न्यूज़पेपर्स उठाओ और सबकी न्यूज़ की एक समरी बनाओ, और उस समरी का सार एक पन्ने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसको मुझे रोज़ाना फैक्स करो। तो शाम के 7-8 बजे तक दादाजी या नाना जी उन सबको पढ़ते थे और उस पर नंबर देते थे, और वो वापस फैक्स होता था उन बच्चों को। अब आप सोचिए 7-8 साल की उम्र में उन बच्चों को क्या ट्रेनिंग मिली है कि पूरी दुनिया भर की सारी खबरों में से एक पन्ने के बराबर कौन सी न्यूज़ है। ये विवेक, नीर क्षीर विवेक, दूध और पानी को अलग करने का विवेक मैं आप सब में देखना चाहता हूँ। एक और बढ़िया सी चीज़ आपको शेयर करता हूँ कि देखिए, एक यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द 10,000 आवर्स रूल। वो चीज़ जो आप 10,000 घंटे तक प्रैक्टिस करते हैं वो आपकी हो जाती है 10,000 घंटे तक। और ये पाएंगे आप बीटल्स के केस में, म्यूज़िक, पियानो वगैरह, या आप फाइट मास्टर्स का पाएंगे, या किसी भी विधा में। That which you practice for 10,000 hours, it becomes a part of your. This is something I guess from the caveman's time. किसी चीज़ का शिकार करने का उनका हाथ कैसे चलेगा, या योद्धा का तलवार से कैसे हाथ चलेगा, वो उसके अभ्यास से आता है। इसका एक बड़े नज़दीक, मतलब the closest I could find is in a fairly otherwise stupid film called चांदनी चौक टू चाइना or something. No, yeah. अक्षय कुमार, उसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट डायलॉग था, प्लीज़ याद रखिएगा। वो ये कहता है कि उसका जो गुरु होता है वो कहता है, जो उसे कुंग फू सिखाता है, कि आप अपने विरोधी के या अपने 10,000 मूव्स, अपने 10,000 मूव्स को आप भूल जाइए, आप अपने उस मूव को याद रखिए जो आपने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। याद आया? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइए सुन, वक्त की किल्लत थी इसलिए आई एब्रोगेटेड टू माई सेल्फ द जॉब ऑफ बीइंग द चीफ गेस्ट, एंड प्लीज कंटिन्यू सर। चलिए, सो आई ट्राई एंड फिनिश दिस अर्ली। आई वाज ट्राइंग टू इम्पार्ट सम होमिलीज टू द किड्स।
आप प्लीज़ सोनल जी को इंट्रोड्यूस कर दीजिए पहले. हाँ. So, please everyone be seated. So, we have with us Mrs. Sonal Goyal. She is a 2008 batch IAS officer and she is currently posted as Resident Commissioner in Tripura House. So my cadre is Tripura and I worked in two states, Tripura and Haryana. And my batch is 2008, so it is almost like 15 years that I have worked in government. So here we have an experience of a very senior bureaucrat who has served the entire service and someone who is going into the service. So ma'am, we believe that your experience will motivate these students in their journey and the target that they are aiming. तो इसलिए मैं बाकी अलग चीज़ें बताऊंगा एंड मैम विल फोकस ऑन द सर्विस. ओके. आई वाज ऑन द 10,000 आवर रूल और 10,000 टाइम्स रूल. So please stay focused in that sense. Your strength is going to be what you have done diligently time and again, and that is which is what I'm again coming back to, the editorial and how you keep on practicing making précis of it. Right? At the end of it, again I'll go back to another film called Ben-Hur. Charlton Heston, not this recent one, computer graphics वाली नहीं, पुरानी वाली. उसमें एक सीन है जिसमें बेनहर इज़ रोमिंग अराउंड ही इज़ बीन आउटकास्ट, ही इज़ बीन एग्जाइल्ड, और वो एक अरब के पास जाता है जो अपने घोड़ों को तैयार कर रहा है फॉर टेकिंग पार्ट इन दैट चैरियट रेस, द फेमस चैरियट रेस सीक्वेंस. ये सीन बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो बार बार उसके अरब के घोड़े जो हैं, 4 घोड़े हैं, वो बार बार रेस करता है और जाके किसी टेंट में घुस जाते हैं. मतलब एक्सीडेंट होता रहता है उसका. राइट. सो ये दूर से खड़ा देख रहा है, गुलाम है, और ये दूर से खड़ा देख रहा है. ही सेज, हॉर्स ट्रेनर को बोलता है कि आप जो सबसे बाहर वाला घोड़ा है उसको अंदर कर दीजिए, अंदर वाले को बाहर कर दीजिए और फिर से ट्राई कीजिए. सो ही डज दैट और इसके बाद वो बड़े बढ़िया से स्पीड आ जाती है घोड़ों में. सो ये जो शेख है द अरब, ही आस्क्स हिज हॉर्स ट्रेनर कि ये कैसे, तो उनका वो जो चीथड़ों में खड़ा हुआ है आदमी उसने बताया है. सो ही कॉल्स हिम, हाउ डू यू नो? ही सेज आई यूज्ड टू बी डू द रेसिंग. सो ही सेज कि तुमने ये पता कैसे लगाया? नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल एंड इट्स अ लाइफ लेसन फॉर मी इन पर्सनल मैनेजमेंट. ही सेज देखिए, जब आपकी चैरियट ऐसे करके जाती है, राउंड करती है, आपने सबसे बाहर उसको लगाया हुआ है जो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. छोटा घोड़ा है जो बड़ी तेज़ी से घूमता है, और सबसे अंदर लगाया है जो स्टैमिना रखता है, तो वो ही इज़ नॉट फ्लेक्सिबल. तो ये इसको सीधे ले जाना चाहता है, वो अंदर मुड़ना चाहता है, तो बार बार एक्सीडेंट हो जाता है. सो व्हेन यू इंटरचेंज द 2 horses, the innermost one will take a sharp turn and the outer one will have the stamina to carry the chariot. This lesson in personal management, which is almost never followed in the government, is that you should put the right person with the right aptitude in the right job. Okay? People who have a very strong brain for finance, they often end up in tribal development or ministry of home. They don't have the guts to take a very tough decision in the field. कहाँ गोली चलवानी है, कहाँ नहीं चलानी है. He is better used to balance sheets. So you should identify the right talent. That is fine when you get into service. For now, please figure out, अभी आपके विद्यार्थी वाले मोड में इतना ही कहूँगा कि ये देखिए कि आपकी किस पर्टिकुलर इशू में आपकी वीकनेस है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किस पर आपको कितना अभ्यास करना है, कितनी तवज्जो देनी है, एंड हाउ डू यू सरमाउंट योर small weak points. Anyway, I will stop here. I'm sure that we will have lots of time to interact once you are in the go. Okay? And with that, I would like to thank सौरभ जी, सनातन जी जो आपके कोर्स डायरेक्टर्स हैं, और एक और है सिद्धार्थ, राइट?
तो आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग इस दिस diverse but unified in one goal and one objective. Please carry on and all the very best in your aspirations. Thank you. Please carry on. So now Sonal ma'am, like we have a lot of aspirants here, and since आपकी journey just after 2008 maybe I think you got 13th rank. Yes. Leave this. Just ma'am clip it. Is this okay? Inside or outside? So ma'am, can you share some insights from your preparation journey as well, and after that your journey in the services, which may motivate the students towards, like, because motivation is a very important factor and that we get after knowing what we are going to get in this service. So can you share some insights and which would motivate the students? ओके, थैंक यू रिस्पेक्टेड जलज सर, जिनसे मैं सेकंड टाइम मिल रही हूँ. एक ऐसे ही एक इंट्रैक्शन किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में था, वहाँ पे सर से फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई. सो सर हैज़ बीन ऑलवेज वेरी इंस्पायरिंग इन हिज टॉक, ऑलवेज ऑफ कोर्स विद हिज एक्सपीरियंस. आई एम वेरी जूनियर टू हिम, so it's always a delight to be sharing the dais with him. All the course team members, the directors of the Prepp IAS and dear students, I firstly congratulate you all on the auspicious occasion of the Teachers' Day. We are meeting on a very important, because as a student, so this Teachers' Day is very important for a teacher as well as a student. And I firmly believe that we are all students all throughout the lives. We all keep learning, we all should actually keep learning, we all should try to improvise what we are, should try to achieve more, so that is very very important. So you asked me about my journey and मेरी preparation कैसे करी, और in fact जो आपने एक जो बात बोली मैं उससे शुरुआत करना चाहूँगी. जो आपने मुझे बोला कि how to keep motivated, how to motivate yourself, और जो आपने फिर बाद में एक सेंटेंस मुझे जो सेंटेंस बोला वो ये था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, इज़ दैट कि सर्विस के बाद में कैसे लाइफ होगी ये जाने के बाद पता लगता है, राइट? कि सर्विस में आने के बाद में क्या होगा वो बाद में पता लगता है. ऑफ कोर्स वो बाद में पता लगेगा, बट माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वेस्ट एंड गाइडेंस टू स्टूडेंट्स इज़ दैट कि if you are sincerely willing to prepare for civil services, so you should have that clarity in your mind that why you want to be in civil services. आपको सिविल सर्विसेज में क्यों जाना है? सबसे इम्पॉर्टेंट ये सवाल जो है ये आपके जहन में क्लियर होना चाहिए. क्या ये आप खुद के लिए करना चाह रहे हो, या आपकी फैमिली का प्रेशर है, वो बोल रहे हैं कि एक स्टेटस सिंबल है समाज में और इसलिए मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है तो इसलिए वो कोचिंग में इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके वो पढ़ाई कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एफर्ट्स 100% दिए जा रहे हैं नहीं दिए जा रहे हैं, या आप एक्चुअली में यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड हैव सम चेंज एंड इम्पैक्ट इन द सोसाइटी, इम्पैक्ट इन द लाइव्स ऑफ द पीपल. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ यू हु आर हैविंग दिस नोशन एंड थॉट इन द माइंड कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है, कि मेरा रीज़न क्या है सिविल सर्विसेज में जाने का. I would like to ask any one or two of you, what is your reason? For example, if you have decided to be in civil services, I am not sure whether they are all enrolled. Some are enrolled. So those who are enrolled, जिन्होंने enrollment करा ली है, उसमें से एक या दो students reply करें, because I want to discuss with them and of course with the other students that why you want to be in civil services. Any one of you who has already enrolled in the program, was already enrolled. Yes. Yes, ma'am. So, what's your good name? It's Arvind Bhatt. Okay, yeah. I was working in 2019 at a job, but then I got a call that I was like, I came from a Kashmiri Pandit background, so it has always been a very downtrodden situation for us. And at the same time, I got a call that one of my friend, like, he has lost his life because of drug abuse. So Okay. that was a turning point for me. I wanted to
do something, like, because most of the people around there that I've seen are going towards drugs. So that was So the this turning incident was in which part of the country? point in Jammu and Kashmir. In Jammu, okay. So, like, a community which was doing good, it has like gotten down into the branches of drug abuse. Right, right. So that was a turning point. So I wanted to get into the army. My father's in defense. So that was when I got into Indian Navy in 2020, but I broke my arm. Okay. So I wanted to get into a position where I can influence people, where I can change the situation for some. So that was the turning point for me, and I broke my arm, so I couldn't get into the Navy. Okay. So after that, I shifted to civil services. So you have already appeared in any of the attempts? Yes. Okay. Last year, I think 2020, I did. Okay. Gave my test. Okay. Was not able to clear my prelims. Okay. So I'm looking forward to. So his ambition and his aim of being in civil services is to bring an impact in the lives of the people and become a change agent. A very clear thought triggered by an incident, and he being the youth, he has seen that how people of your generation, people of our generation are getting into the ills like drug abuse. And it is not only in Jammu and Kashmir, it is almost in every state with some plus and minuses. It is also in the northeast. It is also in Haryana and Punjab. Right, so a very important and I would say a convincing reason to be in civil services. Any other response? Ma'am, good afternoon. Good afternoon. Please be seated. Don't worry. हाँ. मैम मुझे ये मोटिवेशन यहाँ से मिला कि लाइक मेरा जो ब्रदर है ही इज़ अ स्पेशल चाइल्ड एंड मैं जब उसके रिगार्डिंग जाती थी कहीं पे NGOs वगैरह में, तो मुझे वहाँ पे बहुत कमियाँ दिखती थी और ये लगता था कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं है अभी, तो इसको बहुत ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है. उतने मतलब ना उतनी स्ट्रैटेजीज हैं, ना उतने प्रोग्राम्स हैं, मतलब बस चल रहा है चीज़ें. तो एक चीज़ मुझे बहुत ट्रिगर कर गई कि मेरा भाई जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो मैं उसके लिए और ऐसे बच्चों के लिए मतलब मैं कुछ करना चाहती हूँ. तो मुझे ये प्लेटफॉर्म मतलब लगा कि इससे मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ. लाइक आप NGO में काम करके ऐसे वैसे भी कर सकते हो, बट इट विल बी मोर इम्पैक्टफुल. Yeah, so you will be in a position, but it is not necessary that in every profile you will get that opportunity. But yes, of course, when you are in field and even later on, if you are in like IAS or even IPS, so you will get the responsibility as secretary in the department, as director in the department, and later on, you know, so that would definitely be there. And you know, so my dear friends, why I am discussing with you all is that this is very, very important for every one of us who tries to be in civil services, is that the idea, your aim and purpose, आप क्यों civil services में जाना चाहते हैं और civil services ही क्यों, कोई और alternative career या profession क्यों नहीं, ये notion बहुत clear होना चाहिए. तो I will briefly mention about my journey. So मैं हमारा नेटिव प्लेस पानीपत हरियाणा है, बट मेरे फादर CA हैं, तो पापा विद ऑल हिज स्ट्रगल एंड एफर्ट्स ही सेट अप हिज प्रैक्टिस इन दिल्ली. CA ऑफिस उन्होंने दिल्ली में इस्टेब्लिश किया आफ्टर हिज मैरिज. सो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली एंड एक बहुत ही कॉन्जर्वेटिव तरीके का हमारा फैमिली एनवायरनमेंट रहा बचपन में, दैट से टिल ऑलमोस्ट लाइक द एज ऑफ ग्रेजुएशन गर्ल्स वर getting their education, and then after that my cousins and all, they were getting married. So हमारी भी बहुत ज़्यादा कुछ ambitious वो नहीं था कि बहुत कुछ extraordinary करना है, but yes of course ये था क्योंकि पापा is a professionally qualified, so ये ज़रूर था कि that he gave us good education. So when I was in my third year of graduation, it was in 2003, almost 20 years back, and I was also doing my CS part-time companies, the CS course I was doing. So I had already completed the 2 stages. So during that time I actually read about civil services in one of the magazines, the competitive magazines we have in our library.
But frankly, till that time, nobody in our family had ever discussed about civil services, and हमने कभी देखा भी नहीं था. एक बहुत ही protected environment में हमारी upbringing रही. My school was hardly a kilometer, so we used to walk on foot to go to our schools from 6th to 12th. Very neighborhood school type का था, and family was always there to take care of us. So कोई challenges भी नहीं थे majorly. But then when I discussed this with my parents and family about the civil services, because I actually felt that CS and commerce करके मैं corporate profession में तो definitely चली जाऊंगी, but I will not be able to give my efforts for serving the society and country. That nation calling जो एक चीज़ मुझे ऐसे kick लगा. So few days there was in fact debates and discussions. They did not agree. So all those apprehensions came into the mind of my parents, especially my father, that it is still one of the toughest. And then the question was ki why this shift? Because my graduation was almost complete and I had got placement in 2 companies through campus recruitment in Big Fours actually. And then why this shift, and then how many years to invest in civil services, and even after your 100% efforts the selection is not sure shot. And if you don't get selected, then what will you do? And if you get selected, then what service will you get, which rank you will get, which cadre you will get, how will you settle your family life, more so being a female. So 5-6 महीने लगते गए ये सब discussion चलता रहा. तो but then I did not budge. And then when my father for a car to move, for a vehicle to move properly. So initial 7.5 years I worked in Tripura, then I came to Haryana on inter-cadre deputation. I worked for 4 years in Haryana. Then in September 2020, I went back to Tripura in Agartala, and then last year say I am posted in Delhi as the resident commissioner. So these all 15 years, friends, have been very much insightful. They have changed the perspective for me as an individual, as an administrator. बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं पहले कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन there are limitations in the system. So now I come to the pros and cons of the service. So pros of course are there, that you have respect and charisma. You have that position in administration to bring a change, to implement the government policies and schemes. And of course at a very young age you get all these opportunities. Now we see the students, because I keep interacting with the recently selected batches also. So 22-23 की age में मेरा selection हुआ था when I was I think 25. So 22-23 की age में students are getting selected, they are becoming officers. So till they reach 30, they are already working as a deputy commissioner. So so the opportunity which you are getting at a young age, and then the diversity. You will be working in the special abilities department, you will be working in a department like sports, you will be working in rural development, urban development, agriculture. So this is unparalleled. So this is an opportunity of course given by the services, but it definitely comes with some of the challenges like transfers which are not in officers' control, challenges like political interventions, challenges like you have a paraphernalia around you. And now I think in fact sir would also agree that the vulnerability of services has increased because of course the reforms are positive, the digital initiatives, that they are increasing transparency, accountability, the social media. But sometimes what is happening is that people are recording some video of some action, floating it on social media and creating a negative vibes also. So you have to be careful as an officer of what you speak, how you deal with people. And definitely it is important for all of us to be compassionate, to be empathetic, to have that clarity in your mind and have that leadership quality. Because आपकी टीम को आपको lead करके ही चलना पड़ेगा. You have to nurture your team so that if you are even transferred, that initiative which is there, the program and the scheme which is there, they should be implemented well. So that sustainability mechanism also needs to be developed,
in the system, in the organization where you are working. That is also very, very important for all of us to keep in mind. So now friends, coming to the strategy part, I will not delve into too much of detail because only few of you have enrolled. So basically I always suggest to the students कि if somebody has to give a prelims in the next year, for example June 24 में किसी को prelims देना है, तो एटलीस्ट 1 year प्रायर से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. एटलीस्ट 1 year, 1 year एटलीस्ट है, उससे पहले करें तो अच्छी बात है. तो इनिशियल 5 to 6 months शुड बी डिवोटेड टू योर फाउंडेशन लेइंग. सो फाउंडेशन लेइंग वुड मीन दैट रीड द सिलेबस थॉरली. जीएस एंड मेंस पूरा आपको, अगर आपको कोई नोट्स बनाने हैं, आपका कोई नोट्स अवेलेबल हैं, या आपको सपोज कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है, या आपको सेल्फ स्टडी करनी है, वट एवर मैकेनिज्म यू आर अडॉप्टिंग, सर श्योर. So whatever mechanism you are willing to adopt, do that, and initial 5 to 6 months, say till October, November, should be your foundation laying, and then shift to 3 months, 4 months of mains preparation. So why friends mains is important? हमारा जो पूरा जो examination process है उसमें we know that prelims is objective and prelims is a qualifying thing. And mains is subjective, so basically what you know has to be